Students, so in my last video we have started rules of debit and credit, and I have told you the rules of traditional and modern approach, and here in front of you I have given the examples which I made ahead as classification of accounts. So here I have written the account, the name of account, and have classified these accounts into the traditional approach and the modern approach. Like we have building account. Building account is the nature of a real account in the traditional approach, and under modern approach we debit the asset. So similarly you will have to revise all these classification of account according to the both approaches. Fine. Similarly, next is bills payable account. So bills payable account is the bill which is made by the name of supplier, कि आपने किसी पर्सन के पैसे देने हैं और उसने आपको आपके नाम का बिल बना के दिया है कि हाँ जी आई एम योर क्रेडिट इन फ्रंट ऑफ यू. So this is the name of persons. So that is why it is a personal account. And according to the modern approach, we classify our assets according to the nature, whether it is your asset, expense or liability. So according to asset, liability and expenses, losses, profit, we debit or credit the accounts. ठीक है जी. Then after that, interest payable. Interest payable means outstanding interest. So here outstanding interest is representing the interest account, so it is the personal account, and according to the modern approach it would be credited since it is the liability. Fine. Then similarly I have given more examples here. Debtors account, purchases account, cash account, proprietor account. Proprietor is the businessman जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, एंड सिंस उसका कोई नाम होता है तो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच में हम उसको पर्सनल अकाउंट से जानते हैं. बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच, सिंस ही कॉन्ट्रीब्यूट्स द कैपिटल टुवर्ड्स द बिजनेस, सो इट विल कंसिस्ट ऑफ द liability towards the business, it would be credited here. In the same way, rent payable, machinery account, bank account, rent account, wages account and drawings account. So according to the modern classification, first of all you will have to identify the account as an asset, liability, expense or revenue. And according to the traditional approach, you will have to see the three heads, whether this is according to the nominal account, real account or personal account. Fine. Now we will do another example regarding this. Here we have given the example. Like first in the number one transaction we have Dinesh started business with cash. Now this is done by you under accounting equation, but now the thing is different. You will have to identify the accounts from this transaction, and after that you will apply the rule accordingly. So here you will have to check, जैसे कि दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आपने इसमें ये देखना है कि कौन से एटलीस्ट 2 अकाउंट्स वुड बी देयर, बिकॉज वी आर रनिंग विद द डबल एंट्री सिस्टम. सो आपने ये देखना है कि कौन से 2 अकाउंट्स हैं जो बेटा इसमें इंगेज्ड हैं, और उन 2 अकाउंट का आपने पहले नाम लिखना है. देन आफ्टरवर्ड्स according to the identified 2 accounts you will apply the rules. Fine. So Dinesh started business with cash. In this, Dinesh have started, so obviously he is the proprietor. So we have proprietor's name, so it is the personal account. Then cash is coming in, so cash is the real account. So we have identified here 2 accounts. Here they have written accounts involved cash and capital. Now what is the nature of account? Cash is your, certainly it's your asset. Then capital is your capital, because we have itself, we have a head of capital. Now how affected they have explained. चाहे आप मॉडर्न वाला रूल लगा लो, चाहे आप ट्रेडिशनल वाला रूल लगा लो, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या आपने डेबिट करना है, क्या आपने क्रेडिट करना है. नाउ आई विल क्लियर यू फ्रॉम द बोथ अप्रोच. लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो पैसा बेटे आया है, कैश इज कमिंग इन. इट मीन्स कैश इज योर एसेट, और एसेट का हमारा रूल होता है ट्रेडिशनल अप्रोच से रियल अकाउंट.
रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट. So it means debit word comes in. Since cash is coming in, so you will debit the cash. In the same way, capital is the contribution made by the proprietor, and since it is the liability and he is giving the liability towards the business, so he would be credited. This is according to the traditional approach. And according to the modern approach, जब हमारा एसेट बढ़ता है हम क्या करते हैं? डेबिट. और जब हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है हम क्या करते हैं? क्रेडिट. सो इन द सेम वे, इफ योर एसेट इज इंक्रीज्ड इट वुड बी डेबिटेड. इफ योर लाइबिलिटी इज इंक्रीज्ड इट वुड बी क्रेडिटेड. फाइन. नाउ द नेक्स्ट इज बोरोड फ्रॉम नरेश. So borrowed from Naresh means you have borrowed a sum of money from the Naresh. So Naresh is the giver of the loan and loan is your personal account क्योंकि किसी के नाम का लोन है जी. And other aspect involved is the cash. तो दो अकाउंट इसमें कौन से हो गए? First of all cash is coming in, cash, and other is loan from Naresh. So here two accounts are there. Cash and loan from Naresh. Cash is again your asset and loan from Naresh is your liability. और liability आप खुद सोचो बेटा कि अगर आप किसी से इंटरेस्ट पे पैसा पकड़ रहे हो वो आपकी डेट है, आपको कल को वापस करने पड़ने हैं. So that is why it is your liability, it would be increased. Then cash is coming in, so that is why it is debited. So here they have given asset increased debit, liability increased credit. So beta near about 80 to 90% जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है ना, दैट इज द कवरेज ऑफ कैश. मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन में हमें कैश मिलेगा ही मिलेगा. तो एक क्लू तो आपको कैश ही दे देता है. और कैश में सिर्फ एक ही चीज़ आपने दिमाग में रखनी है, कैश आया है तो डेबिट, गया है तो क्रेडिट, क्योंकि ये हमारा रियल अकाउंट है. और अगर मॉडर्न की बात करें, इंक्रीज डेबिट, decrease would be credited. Fine. और other account would be clear itself. अगर आपका एक श्योर है कि डेबिट क्या हो रहा है तो क्रेडिट का हमें हिंट दूसरी तरफ से मिल सकता है. मतलब हमारा दिमाग हमें थोड़ा कम चलाना पड़ेगा. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट इज परचेज्ड फर्नीचर. परचेज्ड फर्नीचर. सो है फर्नीचर अकाउंट इज इन्वॉल्व सिंस इट इज योर एसेट. फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस. सो बेटा ये चीज़ें ना आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी आपने काफ़ी कंफ्यूज करा इसमें अपने आप को. तो जब जहाँ पे आपको फॉर कैश लिखा हो, इट मीन्स राज फर्नीचर हाउस का हमारी बुक में कोई लेना देना नहीं है. ये जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है. सो हमारे यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, फर्नीचर अकाउंट एंड द कैश अकाउंट. फाइन. सो फर्नीचर इज कमिंग इन. फर्नीचर इज योर एसेट. आपका एसेट बढ़ रहा है तो एसेट वुड बी डेबिटेड. एंड कैश इज ऑल्सो योर एसेट. बट कैश आप दे के फर्नीचर खरीद रहे हो एंड कैश इज गोइंग आउट, सो कैश वुड बी क्रेडिटेड. सो हेयर दे हैव रिटन फर्नीचर एंड कैश, एसेट एंड एसेट, इंक्रीज एंड डिक्रीज. सो बेटा ये नहीं होता कि एसेट एक ही आएगा दूसरा नहीं आ सकता, है ना. तो यहाँ पे देखो दोनों ही एसेट है, कई बार दोनों ही लाइबिलिटीज आएंगी. तो बट आपको अपना लॉजिक क्लियर होना चाहिए, दैट्स ऑल. ये नहीं आपने सोचना कि जो चीज़ डेबिट होगी वो चीज़ क्रेडिट नहीं हो सकती. ठीक है. अकाउंट कैन नॉट बी सेम. जैसे यहाँ पे मैं फर्नीचर दो बारी नहीं लिख सकती, कैश दो बारी नहीं लिख सकती, बिकॉज अकाउंट अपने नाम से रिकॉर्ड होएगा, बट नेचर कैन बी सेम. क्योंकि एक एसेट, एक रियल अकाउंट में, एक एसेट अकाउंट में कितने सारे एसेट्स के नाम आते हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, कैश, बैंक एंड सो ऑन. ठीक है. सो इट कैन बी मोर देन वन अकाउंट, बट number of accounts are only by their individual names. Clear? Now purchased furniture from Delhi safe. So here they have purchased furniture on credit. उधार पे खरीदा है. अब यहाँ पे Delhi safe का नाम आएगा. So here two accounts would be furniture and Delhi safe. Furniture is coming in, asset is increased, so it would be debited. And Delhi safe को आपने पैसे नहीं दिए तो बेटा देने तो पड़ने ही है ना. So that is why it's your liability. You will have to credit the liability since it is increasing here. So in this way,
I will give you more transaction, so you will make these heads like accounts involved, nature of account, how affected, debit and credit. Fine.